Welcome back to Algo Arena, guys. So, Codeforces Round 1047, Deep 3, recently completed, recently ended. So, yeah, we'll solve the questions. So, without wasting time, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, तो चलो शुरू करते हैं. सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर और इजी कोड करूँगा जो तुमको लोगों को समझ में आ जाए. चलो शुरू करते हैं. लार्ज स्कल्पचर. That is a search paper on the ठीक है. X is E1 divided X by 2 otherwise X ठीक है. ठीक है. नॉर्मल मैथ्स वाला क्वेश्चन. राइट. या फर्स्ट रिचुअल्स and 90 minus I'll just say let's say it's P and Q and just see out it. See in P and Q stick input and let's just doing it simply Q into let's shift a bit of that's it. Eight times 128. ये मेरे अकॉर्डिंग ही सही होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है. इसके पीछे भी एक स्टोरी है. क्या स्टैंड हो गया फिर क्यों कोडफोर्सेस में लैग कर रहा है. लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जब तक वो हो रहा है. फन परम्यूटेशन. एक हर कॉन्टेस्ट में परम्यूटेशन का एक ना क्वेश्चन तो आता ही है ना. इट्स कॉमन. एक्सेप्टेड बोला था. चलो. The permutation of p sides of your task is to find the permutation of q sides. ठीक है. Normal. ठीक है. Addition and so it's just gives output q of the district. It's basic GCD and okay. ये भी बेसिक सा ही है. ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं इसमें. अरे यार. First, let's just यहाँ पे एक वो दे देते हैं कंडीशन. If it is not okay then say that return 0. In that case, I'll just run on here. ठीक है. And see in save and let's just create two vectors. It's a normal condition, so that's why I'll do this and resultant of m. ठीक है. Let's create it up to and at same used I'll just fill it in with 0 and let's create another one for visitor and let's just fill it with a 0 2.
use flag, let's say it's true, and एक random बना देते हैं, random flag, ठीक है, इसको कर देते हैं false अभी के लिए. Then एक loop लगाएंगे and just loop and I see plus plus and just see in the PF file, ठीक है, and just get an input and just result into 5 is equal to n plus 1 minus P of I. Its I is equal to 0. So here we did the second thing. Let's update the used vector used of one, and let's say let's change the what visited of I is equal to what P of I and 1, right? This is basically to mark old values as visited. Then just update this at used flag and used of y and random flag. Let's update the random flag to is not equal random flag, ठीक है, ये चीज़ें हो गई. एंड बस अब कुछ नहीं करना, एक प्रिंट करा आंसर प्रिंट कराने के लिए परम्यूटेशन साइज प्रिंट करने के लिए एक लूप कॉल लगाएंगे and just see out what result of I and in the condition of I plus 1 if equal to the n, in that case what handle or I'll just write it this to the next line or I'll just space it, right? Let's just इसको ऑनलाइन कंपाइलर में चेक करते हैं. What's the answer? 231451231 सही आएगा. आई एम श्योर ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा टफ है नहीं, और लाइक कुछ ऐसा है नहीं हिडन इसमें, तो जो है और वो प्रॉपर अगर तुम्हारा लॉजिक सही से रन कर रहा है तो डेफिनेटली वो रन करेगा. लेट्स ओपन द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी मैक्सिमम इवन सम. ओके, maximum iven sum. What's accepted? See, I given it 2 integers. ठीक है, and first you choose an integer. Okay. Upright. बेसिकली इसमें मोस्टली सब इवन और का है. let's start. Let's see कितना तक कर पाते हैं. We also already defined. Let's just take the inputs. That's inputs. We'll just provide t minus minus, and let's say let's define a b and just take input a and b, right? And let's say if b and 1 have, if we have 1
एंड तो उसके अंदर फिर से चेक करेंगे कि इफ ए एंड 1, if it is, then I'll just see out what a into b plus 1, सही, and then it's correct one. And in this else condition, if it is what, let's update ग्लोबली असाइन कर देता है m1 को ऊपर, वरना बार बार करना पड़ेगा, बात तो बराबर ही है। as define m1 what see out -1 /n, ठीक है, या m1 and after that else let's just continue it. Okay, maybe what if it's all in the safe condition, right? सही I am थोड़ा confused हो गया था. Okay, let's just assign the next ones. Okay, b is equal, let's say it's b, and b is equal to 0 while vb and 1 is equal 0. In that case I'll just make this 1. Okay, and what happened, I think, yeah, it's, and then let's just update it with this. Fine. After that, we have just one more condition to solve. If a then 1 and b is equal 1, in that case I'll have just have 1 and what, continue, right? ये यहाँ पे क्या error आ रहा है, while what is this, okay, it's not one single, but it's double equal, it's comparing the value. Yeah, it's done into till this if condition. Let's just assign it to the name like k minimum. What k minimum होगा, a and 1, if a and 1 it's 2 is 1, right? And let's say have s1, submit s1 is what, k into k min, that's it, plus and divided by k min 2, ठीक है, it's, and let's s2 same actually, a 2, what the difference is between b upon 2 plus 2, and then at last I have just see out the whole thing, the maximum of this, maximum of first s1 comma s2, right? Maximum of s1 comma s2, that's it. Let's just run next question. Let's run -1 6 58 74 -1 6 58 74, सही है. Let's submit it. Come on dude, फिर टीवी करना है, वीडियो लेंथ 40 मिनट, सही है. Come on यार, बहुत लैग हो रहा है यार ये. Come on.
टीवी करना है, इतना टाइम लगेगा ये, तो बाकी के काम कर लेता हूँ. लेट्स जस्ट create a new file to d.gpp and let's just paste it here. The things, come on bro. I'll just pause the video, okay? यहीं से कंटिन्यू करूँगा एक बार ये सब लोड हो जाए. या लोड हो गया. Let's just submit this question here. Problem number C. Let's see what happens. Till then, let's just stand the D. अरे डॉलर्स भाई, इसी में तो चाहिए सैलरी, इसी में नहीं आ रही बस. क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं डॉलर्स में. हो जा भाई, कम से कम कुछ तो हो, सबमिट हो, नया क्वेश्चन लोड हो जा भाई. यार वो स्पीड टेस्ट कर लेता है, स्पीड भी सही आ रही है. व्हाट्स द इशू? व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? अरे भाई डॉलर्स नहीं देखना है. लेट मी पॉज दिस यार. हो गया भाई, लोड हो गया. सी क्वेश्चन हो गया एंड इट्स करेक्ट. एंड लेट्स डी क्वेश्चन भी लोड हो गया, थैंक गॉड. सो या लेट्स स्टार्ट द डी क्वेश्चन. In an array of effects, we take returns of a couple of strings. अब ये क्या बकवास है? ओके ओके, समझ गया. भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो गया? चलो कोई ना, स्टार्ट तो करते हैं. कोड करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे अटकेंगे वहाँ देखेंगे क्या करना है. एंड लेट्स थोड़ा सा ट्रिकी है ये. आई डोंट नो कैसे टैकल करना है. लेट्स सी, पर करते तो हैं, देखते हैं आगे क्या करना है. लेट्स create vector b and let's just return this thing. It is equal to 0, is less than plus a, and let's see what will be of that. And then we have to create groups. There's separate groups, okay? So for the groups we'll just use the pairs, I mean vector of vector, vector of vector int y, vector not vector. इसे याद आया वेंकट. लेट्स क्रिएट अ ग्रुप्स जो मेरे होंगे n+1 साइज का. एंड इफ साइज ये होगा n तक, ठीक है. एंड उसमें कंडीशन बस इतनी सी रखेंगे, इफ v ऑफ i अगर वो लेस देन इक्वल n होता है, अगर ये लेस देन इक्वल n होता है तो ही मेरे ग्रुप में, या तो ही वो मेरा ग्रुप्स ऑफ
v of I है, groups of v of I dot push back of what I, ठीक है, इतना रखता है। एंड एल्स में भी कुछ नहीं रखता, एल्स में कुछ भी नहीं रखते हैं। एंड उसके बाद क्या होगा, एक लूप और बनेगा, वो मैं बताता हूँ के से, जो चलेगा 1 से लेके एंड के इज लेस देन इक्वल एन तक, एंड प्लस प्लस के। और इफ में कंडीशन होगा कि इफ इज नॉट इन ग्रुप्स, इफ इट इज नॉट इन ग्रुप्स ऑफ के ग्रुप्स डॉट एम्प्टी, ठीक है। एंड groups of k dot size, if or if group of size of k dot size modulo k is equal to 0 है, then in that case I'll just see out what -1 and right, if it is not groups dot empty, groups of k dot empty, and इसमें फिर रिटर्न भी कर देते हैं एक बार यहाँ से। ये हो गए मेरे दोनों इफ कंडीशन हो गई। एंड now for the printing the answers, we have to maintain a acceptor, or let's create it a of n size, and let's create a variable current, let's assign it to the one, and a loop, for the loop I'll just use the k is 1, and k is less than equal to again n till n, and just plus k. Then if this check if groups of k dot empty है, groups of k of empty, then in that case I'll just continue, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करते हैं, जैसे टोटल जो कि हमें फाइंड करना है, टोटल इज इक्वल और ग्रुप्स ऑफ k डॉट साइज, ठीक है। हाँ सही है। एंड then we have to create the next one, eta is equal to 0 is less than till the total, ठीक है। and I plus equal k, here's the twist, then inside this we have to just initialize another loop, what we int j is equal, that starts from the I and j is less than I, j is less than I, and not only the I, j is less than I plus k, and then plus j, ठीक है। here's a twist, एंड इसमें फिर मैं इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स जो कि मेरा होगा क्या, ग्रुप्स ऑफ व्हाट k ऑफ j, groups of k j, and let's just index assign it to current, fine, and let's just increase the current amount. After this let's say to the and let's print, let's see out what a of I, and the spacings as in the output that we have space, and for the next line too, ठीक है। that's it। ओके कहाँ मिस्टेक आ रही है, इफ इट इज़ नॉट ग्रुप्स ऑफ के, यहाँ मिस्टेक आ रही है, क्या आ रही है, के इज इक्वल टू 1 से चल रहा है, लेस देन इक्वल तक चल रहा है, सही है। इन दिस इफ इट इज़ नॉट ग्रुप्स ऑफ के डॉट एम्प्टी and groups of k dot size modulo k is equal to 0, then see out -1 and then return, सही तो है।
क्या इशू है यहाँ पे? एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड। क्या इशू है यार यहाँ पे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। लेट्स जस्ट रन इट टू ऑनलाइन कंपाइलर। लेट्स जस्ट रन। क्या है यहाँ पे, क्या मिस्टेक है ये? लैपटॉप में कौन सा एम्बेड वार्निंग्स वाइट रन व्हाट? ओके, एक तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। इज इट दिस इज, हाँ यही है। वो अभी गलत हो जाता है कंडीशन। इफ इट इज, लेट जस्ट run it again here and then let's see. -1 1 2 2 3 3. Okay. I think let this will pass this time. Let's just submit it. Let's see. अब यार ई और एफ दो क्वेश्चंस बचेंगे, तो वो तो ई एफ जी बच रहा है एक्चुअली। वो तीनों फिर देखेंगे यार, दूसरा वीडियो बना लूँगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है। और वैसे भी अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, लाइक मॉर्निंग रूटीन्स के बाद फिर ऑफिस ऑफिस में फिर इतना। आज तो खैर ऑफिस नहीं होता, लेकिन इसीलिए मैं सोया हूँ आज दिन भर पूरा। सिर्फ वो एक वीडियो बनाया शाम को, शॉर्ट बनाया, और शाम को ही वो आई सी पी सी वाला वीडियो बनाया। पर रेगुलर टाइम्स में तो बहुत हो जाता है। तो हो गया भाई, डी तक क्वेश्चंस हो गए। अगर किसी का एक्स्ट्रा लाइक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कुछ और, तो जस्ट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वंस। थैंक यू, मिलते हैं फिर नई वीडियोस में।